Namaskar dosto, good evening friends and a happy Diwali. Welcome back from Diwali weekend. My name is Sanjay Kalra and welcome to Obesity Special Med Talks. आज के हमारे non-stop show का 1055वां 1055th episode है. Let's have the headlines for today. Now, obesity can increase the lifetime risk of pancreatic cancer. कैंसर का रिस्क पैंक्रियास का, जो बहुत ही खतरनाक और भयंकर सी बीमारी है, उसका रिस्क बढ़ता है 20% बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, and virtually no one is aware of that. That's the problem. The good thing is that you can fight obesity, and 25% of participants who started treatment with technology alone, सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ इलाज किया उन्होंने, they lost 5% of their body weight after 6 months. तो मुझे पता चल गया what I was missing in my life, टेक्नोलॉजी. एंड टेक्नोलॉजी कैसी होती है? अलग अलग तरह की होती है. Engineers at the Massachusetts Institute of Technology, MIT, have developed an ingestible device. ये आप खाते हैं इस डिवाइस को, that's also technology. It activates receptors in the stomach. गुदगुदी करती है स्टमक में रिसेप्टर्स की, which indicates satiety. तो पेट भर जाता है. It increases the houseful hormones from the stomach, and this makes it a potential for new therapy in obesity. And this is minimally invasive. You just have to ingest or swallow that device. Other types of technology, a bioelectronic implant can radically improve treatment options and significantly reduce the cost of care for people living with obesity and type 2 diabetes. And then another study published in JAMA has shown that technology alone cannot replace the human touch. तो technology भी चाहिए, मगर human touch भी चाहिए to produce meaningful weight loss. How do we digest all this? How do we put all this together? And how do we get something meaningful out of this? Obesity Med Talks चल रहा है. Let's see what our topic for today is. Technology and obesity care. A warm welcome to everyone once again. टेक्नोलॉजी एंड ओबेसिटी केयर की अगर हम बात करें तो हमें एक एक्सपर्ट चाहिए जो ओबेसिटी केयर में भी माहिर हैं और टेक्नोलॉजी में सुपर माहिर हैं. And that is our special guest today. A warm and affectionate welcome to Dr. Amit Gupta. Thank you, Sanjay Kalra sir, first of all, for having me for this very, very important program. And you have been running successfully 1,000 plus programs you have already conducted. So I'm very, very grateful to you and thankful to you for inviting me and giving me an opportunity to be featured alongside with you in this important episode. Thank you, sir. We are happy to have you, sir, and we are grateful. Dr. Amit Gupta is a highly accomplished physician and diabetologist and a distinguished portfolio of national and international affiliations. He is director of the Center for Diabetes Care in Greater Noida, chair-elect of the American Diabetes Association's Public Health and Epidemiology Interest Group. He is a member of the International Advisory Committee of the ADA, and single-handedly, he has spearheaded the role of technology in diabetes in India through various organizations. He also works actively for RSSDI, Diabetes India, and the IDF Southeast Asia Regional Council. So warm welcome, sir. Thank you, sir. Pranam, sir. Thank you. बहुत सारे लोग लॉग्ड इन हैं. एहसानुल अमीन आपको हेलो कर रहे हैं. स्वप्ना जैन जी गुड इवनिंग कर रही हैं फ्रॉम वेलोर. एंड एक बहुत ब्यूटीफुल सा हेलो आ रहा है फ्रॉम लाइफ आर इंटरेस्टिंग. तो इंटरेस्टिंग लोग हैं आजकल. तो डॉक्टर अमित, मैं तो हमेशा यही सोचता था कि टेक्नोलॉजी की वजह से वजन बढ़ता है. इज दैट राइट? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, वैसे वैसे हमारा वेट बढ़ता जा रहा है. इज दिस ट्रू? सर, ये आपने ना बहुत ही अच्छा सवाल स्टार्टिंग में ही पूछ लिया है. टेक्नोलॉजी एक्चुअली में सर एक तरह से दो धारी तलवार है. वी कॉल्ड इट ए डबल एजेड स्वॉर्ड. रीजन बीइंग कि अगर हम उसका राइट एप्लीकेशन राइट टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, और अगर हम उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसा आपने बताया कि एक बहुत कॉमनली ऑब्जर्व बिहेवियर या स्टडी है कि विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, और हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाने के कारण से हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. तो अगर हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, और एट द सेम टाइम ये भी देखा गया कि जितना सेडेंटरी बिहेवियर हमारा हो जाता है उतना ही हमारा फिर ईटिंग पैटर्न भी चेंज होने लग जाता है. तो एक तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी को एक्टिवली हम एक पर्पस से यूज नहीं कर रहे हैं और एक पैसिव
फॉलोवर हैं, जस्ट लाइक हम सोशल मीडिया को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, पूरा दिन पूरा टाइम हम किसी ना किसी रील को देखने में स्पेंड कर रहे हैं, एंड वी आर increasing our sedentary times also. It can actually lead to weight gain, more sedentary activity, less activity, more sedentary time, and eating patterns which can be disturbing for the weight gain. दैट पॉइंट इज वेरी वेल टेकन। जैसे आपने कहा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए हमें सेडेंट्री होना पड़ता है और उससे वेट बढ़ रहा है। सो हमारा टॉपिक आज का ऑफ कोर्स इज नॉट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट इज मोर ऑफ अ सोल्यूशन स्टेटमेंट, हाउ वी कैन Yes, यूज टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस आवर वेट। एंड गुड इवनिंग टू यू फ्रॉम राहुल ककाडिया जी एंड ऑल्सो रेखा बटारा मैडम। रेखा बटारा मैडम दिल्ली में है, हेल्थ केयर में काम करती हैं, एंड शी विशेस यू अ हैप्पी दिवाली। happy Diwali, Rekha madam, and good evening, Rahul ji. अभी ऐसा भी फ्यूचर आ सकता है डॉक्टर अमित के, जैसे पहले पटाखे बजते थे, अभी भी बाहर आवाज आ रही है मुझे पटाखों की। हालांकि इंडिया लॉस्ट बैडली टू न्यूजीलैंड इन द क्रिकेट सीरीज, बट पॉसिबल है कि इन फ्यूचर वी हैव ओनली ई पटाखास एंड ओनली ई टेक्नोलॉजी पटाखास एंड देयर इज नो फायर क्रैकर्स ऑफ द रियल टाइप to use anymore. Is that possible in the future? I think, sir, your idea must be a very inspiring idea for many, and I think in no time we may see these things coming up also. So, but now that becomes a very political statement, neither problem nor solution, क्योंकि उसका हल तो हम केके मिड टॉक्स पे नहीं निकाल सकते. But let's talk about obesity and technology. तो एक तरफ तो है, like Dr. Amit said, it's a double-edged sword. Technology leads to obesity, but on the other hand, we can actually have technology improving our obesity health. So let's talk about it one by one. एक एक करके बात करते हैं. So first, let's talk about the delivery of healthcare. So, Dr. Amit, 20 years ago, when you were a student, 5 years ago before COVID, and now, what changes have taken place in healthcare delivery? What does the concept of telehealth and digital therapeutics mean to you? And our window is obesity. Yes, sir. Sir, thank you for asking that question. जैसा कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हुआ और ये देखा गया कि अचानक से हमें टेली हेल्थ या टेली कंसल्टेशंस की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल्स में एक्सेस बंद हो गया, क्लिनिक्स बंद हो गए, और हमें एक क्वारंटाइन में जाना पड़ा, एक आइसोलेशन में जाना पड़ा। तो उस दौरान टेली हेल्थ अचानक से टेली हेल्थ को बूम मिला, एंड देयर आर मेनी स्टडीज जिसमें ये देखा गया है कि जो टेली हेल्थ अगर या टेली मेडिसिन जिसकी हम बात करें, स्पेशली दो तरह के कैटेगरीज में तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पाया गया। वन इज कि हमें देखते हैं कि जो लोग मॉर्बिडली ओबीज हैं, so these are the people, persons who may find it even difficult to go to clinics very frequently. तो टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ की सहायता से हम इन तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, कई बार ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए एक सिंगल पर्सन इज नॉट एनफ, यू नीड ए टीम, क्योंकि आपको डाइटरी इंटरवेंशन करना है, आपको मोटिवेशन करना है, बिहेवियर इंटरवेंशन करना है, अगर कोई मेडिकेशंस हैं तो थेरेपेटिक उनको मॉनिटर करना है। तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी केयर कई बार टेली हेल्थ या टेली मेडिसिन के थ्रू देना आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम एक दूसरा, आई वाज गोइंग थ्रू सम पेपर्स जिसमें एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ था फॉर डिजिटल इंटरवेंशन इन चिल्ड्रन विद ओबेसिटी। उसमें देखा गया था चिल्ड्रन दे हैव टू गो टू स्कूल्स, उनको एक स्टिग्मा भी होता है, उनको क्लिनिक पे नहीं जाना है, फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दैट आल्सो। और कई बार वो कंफर्ट अगर घर में ही बैठे मिल जाता है और पेरेंट्स को भी छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है, टेली दे कैन कनेक्ट विद मल्टीपल डिवाइसेस एंड एट द सेम टाइम द टीम इज देयर। तो ये देखा गया है कि जब हम टेली हेल्थ या टेली मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारा एक्सेस इंप्रूव हो जाता है, और स्पेशली जो चैलेंजिंग पॉपुलेशन है, लाइक विद मॉर्बिड ओबेसिटी, डिफिकल्ट टू मूव अराउंड, दोज चिल्ड्रन विद ओबेसिटी, तो वहाँ पे टेली मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है। ऑफ कोर्स बाकी जो लोग इस दायरे में नहीं आते उनके लिए भी टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चैलेंज टेली हेल्थ या टेली मेडिसिन का जो है, वो सर सॉल्यूशन तो दिया है, पर चैलेंज भी बताना पड़ेगा कि सबके पास जरूरी नहीं है कि उनके पास इंटरनेट का एक्सेस हो, उनके पास स्मार्टफोन हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर अभी आज भी ये लगता है कि टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन अवेलेबल होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसको एक्सेस कैसे करें, या उनके डॉक्टर्स ये सर्विसेज उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ये सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो आई थिंक अगर हम उस गैप को ब्रिज कर सके तो आई थिंक हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सो ये थैंक यू, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि डिजिटल थेरेप्यूटिक्स या टेलीमेडिसिन से
we can reach out to a much larger number of people. That's one thing we can reach. And Yes. दूसरा जो आपने कहा, the doctor may be near you, but the supporting staff, the physiotherapist, the clinical psychologist, the dietitian, the motivator, the motivational psychologist, they may not be accessible to you physically, and you can access their services digitally. सर So, आपने एक डिजिटल सॉरी सर हाँ, आपने carry on. डिजिटल थेरेपेटिक्स वर्ड यूज किया और आपने पूछा भी डिजिटल थेरेपेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम इफ यू लुक एट द इंटरनेट वी विल फाइंड thousands and thousands of different healthcare applications are available. तो यहाँ पे ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से एप्लीकेशंस रिलायबल हैं, कौन से एप्लीकेशंस आपको एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन या एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस दे रहे हैं। तो एक कैटेगरी है जिसको हम डीटीएक्स या डिजिटल थेरेपेटिक्स बोलते हैं। एंड सम ऑफ दीज डिजिटल थेरेपेटिक्स दे आर क्लिनिकली अप्रूव्ड एंड दे आर क्लिनिकली वैलिडेटेड। सो अगर हमारे व्यूअर्स हैं जो कि हाँ मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है और दे वांट टू गो फॉर दी डिजिटल थेरेपेटिक्स और कुछ एप्लीकेशंस को ट्राई करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि you go for those applications या tools which are clinically validated, जो evidence based हैं, evidence backed up हैं। For example, UK based एक agency है which is called ORCA, and this ORCA what it does is that it actually evaluates any application on more than 300 criteria. So if you are able to fulfill those 300 criteria, only then app is receives a, just like sir ISO के तरह से होता था कि there are some standards which somebody has to follow. So every app has to follow some standards. So अगर हम वो standards follow कर रहे हैं, then probably these digital therapeutics they are very good for any kind of interventions. So Vinayak Sharma ji भी आपको good evening कर रहे हैं, and today we are talking about technology and obesity. We realized first of all that technology is a double-edged sword. Technology can increase obesity rates, but it can also be used to fight obesity. Then we began talking about digital therapeutics. वो भी एक दो धारी तलवार है. Digital therapeutics, the digital apps that you access, they may be accredited, they may be professionally appropriate and relevant. But it is also possible that we might get stuck with a wrong app, which has maybe errors of omission or errors of commission. So, Dr. Amit, supposing I'm just skimming the internet, surfing, Right. I do not take help of a healthcare provider. I go and get stuck in a non-accredited app or something which is not up to the mark. इसका क्या-क्या नुकसान हो सकता है मेरी सेहत पे? एंड आई एम अ पर्सन ट्राइंग टू फाइट माय ओबेसिटी. नुकसान भी हो सकते हैं क्या इफ वी गो टू अ तो रॉन्ग ऐप? नुकसान हो सकते हैं क्योंकि कई बार उसमें क्या किस तरह का आपका इवैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल द ऐप में सिंपली रिकमेंड कि आपको इतने घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बट यू मे नॉट बी फिट फॉर डूइंग दैट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपको कुछ कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको कुछ अचानक से यू मे बी हैविंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आल्सो, जिसमें आपको एक प्रॉपर एक आपको फास्टिंग करने के लिए बोला गया, बट दैट मे नॉट सूट योर स्टाइल बिकॉज वहाँ पे पर्सनलाइजेशन नहीं है या उसका बैकअप नहीं है। और आई बिलीव कि अगर आप ओबेसिटी जैसी डिजीज, बिकॉज वी कॉल ओबेसिटी ए डिजीज एंड डब्ल्यूएचओ आल्सो कॉल्स इट डिजीज, तो अगर आप डिजीज बेस्ड किसी इंटरवेंशन के लिए जा रहे हैं तो प्लीज डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन बिकॉज इट कैन इंक्रीज योर कॉम्प्लिकेशंस, it can lead to some new complications. Instead of getting a good result, you may end up with some troubles. So I think these are the warnings and these are the red flags. So अगर आपको कभी भी कुछ जाना है तो it is always wise, as संजय सर has already pointed out, कि टेक्नोलॉजी है लेकिन ह्यूमन हैंड भी है। सो टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन हैंड दे शुड बी गोइंग टुगेदर। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि जब भी हम जाते हैं डिजिटल थेरेप्यूटिक्स की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ, हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना है. टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी, पर तभी मदद करेगी अगर हम उसे ठीक तरह से इस्तेमाल करें. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने मान लो रसोई में चाकू चलाया, विद दैट नाइफ यू मे कट द वेजिटेबल और फ्रूट इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू माइट एंड अप हर्टिंग योर ओन हैंड. एक बार मुझे भी चोट लगी थी डॉक्टर अमित, देखो मैं 7 साल का था, पहली बार मैंने लेमनेट बनाया. कैन यू सी? It still hurts, you know. Whenever I see lemonade being made, it hurts. So, ऐसे ही जब हम अपना इलाज करते हैं, कुछ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, we should be careful. We should use the right technology in the right manner. Let's talk about the types of technology that we have. तो पहले तो डायग्नोसिस की बात करते हैं. कोई ऐप्स हैं क्या डॉक्टर साहब जिसके साथ हम अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकें, बॉडी फैट परसेंटेज चेक कर सकें? एंड हैव यू एवर यूज्ड एनी ऑफ दीज ऐप्स जस्ट टू screen and diagnose for obesity in yourself and in your colleagues or patients?
सर जैसा कि हम सब जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट टूल है, कैलकुलेशन का टूल है, जिससे कि हम ओबेसिटी को क्लासिफाई करते हैं और इट इज़ वाइडली यूज्ड। और दूसरा एक टूल है सर जो बड़ा सिंपल है, जो आप भी आजकल काफ़ी लोगों को बताते हैं, दैट इज़ द योर हाइट टू वेस्ट रेशियो। अगर आप निकाल रहे हैं तो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टूल टू मेजर ओबेसिटी। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हैं, और सिंपली आपको अपना वेट एंड हाइट उसमें पुट करना होता है, एंड दे इट गिव्स यू योर बॉडी मास इंडेक्स। और बेस्ड ऑन योर बॉडी मास इंडेक्स इट क्लासिफाइज कि आपका मोटापा है, ओबेसिटी कितना है, कि किस क्लास की ओबेसिटी है, और वो डिपेंडिंग ऑन योर बीएमआई वो आपको एक एरिया बता देता है। जहां तक सर बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की बात है, तो आई डोंट थिंक देयर आर एनी एनी एप्लीकेशंस जो आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस या आपको फैट परसेंटेज वगैरह कुछ बता पाए। तो उसके लिए हमें बिकॉज वी नो कि एडवांस टूल्स या एडवांस मशीन्स होती हैं जो बायो इम्पिडेंस पे बेस्ड होती हैं, तो उसके लिए तो यू नीड टू विजिट ए क्लिनिक और द हेल्थ सेंटर जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। बट जैसा कि सर ने बताया कि देयर में बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस विच में बी क्लेमिंग कि आप सिर्फ अपना फिंगर रखिए ऐप पे किसी पॉइंट पे और आपको अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस पता लग जाएगा। तो वो सब आई थिंक वहाँ सब वो एक मिसलीडिंग चीज़ें हैं, तो उनमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी कोई फ़ोन में ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें डिजिटल जो हमें बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस बता सके। अलका केसरवानी जी आपको नमस्कार कर रही हैं। एंड यू आर राइट, यू कैन चेक योर बीएमआई, यू कैन यूज अ कैलकुलेटर, you can do it by mental maths, ayurvedic mathematics, whatever way you wish. But if you are too lazy to do that, then technology is there to help you do the calculation. At the same time, there are many apps which give you a rough idea of your body fat percentage. They will use your waist circumference, neck circumference and hip circumference. ये तीनों आपसे मांगेंगे and they will give you a fair idea. But it's just an idea. जो gold standard है that will be DEXA और bioimpedance. उसके लिए आपको obesity clinic में ही जाना पड़ेगा. Now that we have diagnosed ourselves as having obesity and we've decided, अब हम मूड में आ गए, अब ना मूड में आ रहे हैं, फीलिंग आ रही है डॉक्टर अमित के हम इलाज करेंगे, तो अलग अलग तरह के इलाज होते हैं। सो सबसे पहले तो डाइट की बात की जाती है। तो हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प मी बाय, कैन इट टीच मी द राइट डाइट, can it help me count my diet, can it help me regulate, what can technology do for me today? एंड मान लिया कि मैं महा लेजी हूँ, मुझे अरिथमेटिक नहीं आती, कैलोरीज नहीं आती, मैं फोटो खींच के भेज सकता हूँ अपनी प्लेट की, उससे टेक्नोलॉजी क्या मदद करेगी मेरी? सर ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग एरिया, और ज़्यादातर जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, तो उसमें एक ये एसेंशियल कंपोनेंट आप कह सकते हो कि किसी ना किसी तरह से डाइटरी इंटरवेंशंस को एड्रेस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओबेसिटी मैनेजमेंट का। सो फॉर एग्जांपल आई नो वन ऑफ द एप्स लाइक सेवन शुगर, एंड देयर मैनी लाइक दैट, जिसमें आप सिंपल अपना प्लेट का एक फोटोग्राफ खींच सकते हैं, एंड वो फोटोग्राफ आप अपलोड कर देते हैं उस एप्लीकेशंस के अंदर, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको उसमें पूरा एक कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है कि इसमें कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर हमें अपना कार्ब कैलकुलेशन वैसे नहीं करना है, फैट कैलकुलेशन जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं उनसे नहीं करना है, तो ये टूल्स बड़े यूजफुल हैं जिनसे हम कैलोरी काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर कई बार हम कैलोरीज का हिसाब नहीं रख पाते कि हमने पूरे दिन में कितना कैलोरी इनटेक लिया, सो एवरी टाइम इफ यू आर क्लिकिंग ए पिक्चर एंड एंगेजिंग योरसेल्फ विद द टेक्नोलॉजी, और आप अपना डेटा अगर मैनुअली भी फीड कर रहे हो, तो एटलीस्ट यू गेट ए रफ आइडिया कि कितना कैलोरीज आप पर डे इनटेक कर रहे हो। तो आपको उसमें हमेशा एक जब अब हमें पता है कि हम कितना कैलोरीज ले रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो देयर इज ऑलवेज ए मोटिवेशन कि हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सो डाइट इज समथिंग विच इज़ वेरी चैलेंजिंग, और सबको लगता है कि हम न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करते हैं, कई बार नहीं करते। टेक्नोलॉजी वाकई मदद करती है इसमें, जैसे डॉक्टर अमित ने कहा। एंड समटाइम्स वी गो ऑन एन एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, देन वी एंड अप विद मैक्रो न्यूट्रिएंट malnutrition और विद माइक्रो malnutrition, vitamins, minerals, इलेक्ट्रोलाइट्स ये कम हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। It would be actually very difficult for a single human being to keep track of all the macro and micronutrients. मतलब कितने विटामिन, कितने मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम, कहाँ कहाँ तक जाओगे? तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी इसमें मदद करती है। सो हमने अब ओबेसिटी डायग्नोज कर ली टेक्नोलॉजी के साथ, हमने डिसाइड कर लिया कि हम डाइट फॉलो करेंगे। आवर डॉक्टर टोल्ड अस टू फॉलो 1500 और 1200 कैलोरी डाइट, जितना भी था। एंड नाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस reach that goal gradually. And of course, we do need that the human touch as well. There's a nutritionist or a qualified professional who's helping us, telling us, के, for example,
पूड़ी ज़्यादा अच्छी है या परांठे ज़्यादा अच्छे हैं? डॉक्टर अमित, व्हिच इज़ बेटर? पूड़ी, परांठा, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? मुझे पूरी और पराठा दोनों ही पसंद है। But Dr. Amit has a very enviable BMI, so it's allowed for him. यहाँ पे एक ट्विस्ट ज़रूर है कि जो परांठे हैं जिस तरह से वो फ्राई होते हैं, दे सोक अप मोर घी, एंड जो पूड़ी है यू ऑफ कोर्स वो तली जाती है, बट यू थ्रो इट इनटू द ऑयल एंड यू ब्रिंग इट आउट इमीडिएटली, सो एक्चुअली इट कैचेस लेस ऑयल. सो it is depending upon the way you've cooked, it is actually possible that the puri will give you less calories than the parantha. सर यहाँ पे ना एक चीज और हम जो न्यूट्रिशन बेस्ड टेक्नोलॉजी करते हैं, अभी एक फूड लेबल्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्सर हम फूड लेबल तो होता है हर फूड के पैकेट के ऊपर, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच टाइम, या हम उसको इतना देखने का हमें समय नहीं मिलता। और कई बार बहुत सारे तो फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि फूड लेबल बड़ा छोटा सा लगा होता है, और उसमें वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिस हो जाती है, एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए हेल्दी फूड और इट इज ए अनहेल्दी फूड. So now I think ki technology can help us, because there are many applications where you can simply scan the food label and immediately every information will come in front of you in a summarized form ki what is happening. And augmented reality is something, for example, Apple ne couple of years before they have launched one of their very exciting device, that is the Apple Glass with a augmented reality thing. So such kind of technology in future, जब आप shopping करने जा रहे हो, तो before shopping, when you see that product through your uh, intelligent eye or the technology based eye, you will be able to see whether it is healthy or unhealthy for you. And there are refrigerators, sir, which can actually, when you put the stuff into your refrigerator, these refrigerator can tell you कि आपने कितना calorie store किया है. So I think this is the Internet of Things, which is going to change a lot of things. But this is regarding the nutrition part, जो कि futuristic है. That's really really nice actually, knowing कि जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपने पढ़ाई लिखाई की है, आपके डाइटिशियन डॉक्टर ने आपको बताया हो ये खरीदें ना खरीदें, बट टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू, इट विल रीइंफोर्स एंड एक्चुअली इट विल टर्न आउट टू बी अ गुड टीचर. बट देन डॉक्टर अमित, अभी हम डाइट की बात कर रहे हैं, वील मूव ऑन टू एक्सरसाइज, बट डज इट मीन अगर मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लूं तो देन आई विल नॉट बी एवर एबल टू ईट एनीथिंग टेस्टी इन माय लाइफ? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट फील सो कि टेस्ट आप अभी फॉर एग्जांपल हम दिवाली पे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, आपको पता है सब लोग मिठाई खाना चाहते हैं, तो लेकिन कई बार सर हम फूड को इतना एज ए टेस्ट की बजाय हम अपने माइंड को फॉलो करते हैं, एंड वी ईट टू सेटिस्फाई आवर माइंड हिडोनिक हंगर. तो हमें कई बार अगर हम फूड बहुत धीरे धीरे खा रहे हैं और बहुत स्मॉल बाइट्स में खा रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग टाइम एंड वी आर ईटिंग इट लीजरली एंड वी आर नॉट ईटिंग इन ए रश, तो अक्सर आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा खाने से भी आपको एक सैटाइटी की फीलिंग आने लगती है. आपको एक जो ब्रेन है वो बड़ा स्मार्ट है, वो कैच कर लेता है उसको, जो एक विंडो है जिसमें कि उसको एक अच्छी फीलिंग आती है, कि एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है, दैट आई हैव ईटन समथिंग व्हिच इज गिविंग प्लेजर टू योर माइंड. तो आई थिंक वो प्लेजर को एंजॉय अगर आप करना शुरू करोगे धीरे धीरे, एंड इफ यू ईट वेरी स्लोली, टेक वेरी स्मॉल पोर्शंस, and you are not eating to full your stomach or anything, you are just eating for the pleasure. तो थोड़ा खाने के बावजूद भी आप टेस्ट को बिना छोड़े भी अच्छा हेल्दी डाइट खा सकते हो, ओबेसिटी को भी मैनेज कर सकते हो. तो ये खाने की बात की, एंड ऑफ कोर्स आवर टॉपिक इज टेक्नोलॉजी, बट ये चीज़ हमने सीखी उपनिषद से, सो मैत्री उपनिषद, एंड द इंग्लिश, द फिजियोलॉजी वर्ड इज अल्टीमेट. डॉक्टर अमित, देखो मैं पढ़ के आया हूँ लैटिन, ग्लोसोफेरिंजियल मैनूवर. एंड टू एवरीवन हु इज लॉग्ड इन, मैनूवर के स्पेलिंग बताए जाएं प्लीज, द नेशन वांट्स टू नो. मैनूवर इन इंडियन इंग्लिश, इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड इन अमेरिकन इंग्लिश. बट ग्लोसोफेरिंजियल मैनूवर ये कहता है, लेट्स गेट डॉक्टर अमित टू ट्राई इट आउट. आप अपनी टंग, ग्लोसो मीन्स टंग, टेक द टिप ऑफ योर टंग एंड प्रेस इट हार्ड ऑन योर पैलेट, तालू पे प्रेस करें, दैट इज द ग्लोसोपैलेटल मैनूवर. और ये साइंस ने नहीं इजाद किया, ये एक्चुअली ढूंढा मैत्री उपनिषद ने. वो ये कहते हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करो एकांत में, अकेले में, एंड आप ब्रह्मांड पाओगे. इट इज अ टूल फॉर मेडिटेशन, इट हेल्प्स यू इन मेडिटेशन. हाउ कैन डॉक्टर अमित, हाउ कैन वी यूज दिस ग्लोसोफेरेंजियल मैनूवर एज अ टूल फॉर ओबेसिटी मैनेजमेंट, एंड डू यू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क? आई थिंक सर आपने इसको ऐसे ही नहीं बताया होगा यहाँ पे, एंड देयर मस्ट बी सम साइंस व्हिच इज डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर हंगर सेंटर्स. सो कहीं ना कहीं ये मैन्यूवर है जो हमारी कहीं ना कहीं हंगर सेंटर को कहीं सप्रेस करता है, हमारी हमारी सैटाइटी की फीलिंग जनरेट करता है.
but I would like to learn more from you on this particular aspect. So it actually helps, and we would request all the scientists and physiologists who are logged in to do research on this. ये मैत्री उपनिषद से है, बुक 6 वर्स 20, छठी किताब और 20वां श्लोक. एंड जब आप ये प्रैक्टिस करें तो यू विल एक्चुअली गेट अ फीलिंग दैट द वेगल टोन इज गोइंग अप एंड द एड्रेनर्जिक टोन इज कमिंग डाउन. व्हेन द एड्रेनर्जिक टोन कम्स डाउन, द काउंटर रेगुलेटरी इफेक्ट अगेंस्ट इंसुलिन कम्स डाउन एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन. एक्चुअली भूख भी कम लगती है. एंड ऑफ कोर्स जब तक आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप खाना भी नहीं खा पाएंगे, पानी भी नहीं पी पाएंगे. And many of us depend upon various motivational tools. For the vast majority, religion or spirituality is an important tool to help us navigate life. तो spirituality के उसमें लेते हैं इसको कि जब भी आप ये चीज़ करेंगे तो you will be reminded of spirituality. You will be reminded of a higher purpose in life, and that purpose is higher than just eating food just for the taste of food. So that way it helps. बट अकेले डाइट से कई बार क्या होता है डॉक्टर अमित कि हमारी मसल्स गायब हो जाती हैं. इफ आई वांट टू लूज वेट बाय starving myself, I can do that, but it will be a very unhealthy way. So we have to exercise. How can technology help us track our exercise? What are the things that are being used these days? सर टेक्नोलॉजी अगर हम अभी आजकल देखें तो आई थिंक ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में ट्रैकर्स हैं, जो कि आपके एटलीस्ट स्टेप काउंटर्स तो ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन में है, और आपको आपका टोटल डेली का कितना फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, कितना स्टेप्स आपकी मूवमेंट है, वो बता सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक, यू कैन से कि आपकी एक्टिविटी मॉनिटरिंग का और ट्रैकिंग का एक तरीका है. बट दे आर एट द सेम टाइम देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस, देयर आर मल्टीपल things which can help you in becoming more active. For example, many of these smart watches now, they come with a program where you can simply enter the timing. They will remind you that this is the time to stand up. So they allow you to break the cycle of the sitting. So this is just one example. So they are trying to make you more active. So every time you do some activity, sometimes they push you that you are getting this kind of reward. There are applications like one of the application is by Nike, and this is NTC. It has multiple workouts, right from the beginner level to the moderate level to the intensive level. So you can choose your own activity and you can do it from the comfort of your home. जैसा आपने बताया कि सर मसल मास को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप एक्सटेंसिव डाइट पे चले जाते हो एंड यू सडनली कट ऑफ योर कैलोरी इनटेक, you will lose weight, but at the same time, I guess at least 25% of it will be going from your muscles. So अगर 10 kg लूज किया है तो 2.5 किलो कम से कम आपका मसल मास भी कम होने के चांसेस हैं. बट उस मसल मास को प्रिजर्व किया जा सकता है. तो वो कैसे करना है आपको उस टाइम पे, यू नीड टू डू स्ट्रेंथनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस. सो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस अगर आप रेगुलरली करेंगे अपार्ट फ्रॉम योर एरोबिक एक्टिविटी, तो मोस्ट ऑफ द वेट यू विल बी लूजिंग इज विल बी इन द फॉर्म ऑफ द फैट एंड यू विल नॉट बी लूजिंग योर मसल्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी जब भी प्लान करें तो उसमें स्ट्रेंथनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक, और अगर ज्यादा भी हो सकता है तो देयर इज नो हार्म, बट दैट इज द मिनिमम लेवल व्हिच इज रिक्वायर्ड. And so if we are on exercise now, technology helps us in tracking our exercise. मतलब tracking devices हैं बहुत सारी, but they also make exercise more fun. Simple सी Yes. चीज, आपने म्यूजिक सुनना शुरू किया और आप सैर पे निकल गए. The सैर or the exercise or the walking is more fun. You are dancing to music. Uh, the type of music will sort of, provided you like that music, it will stimulate you to dance more. So, Dr. Amit, your favorite music when it comes to exercise? Punjabi, Hindi, English, none सर of the मैं above? हिंदी म्यूजिक चला लेता हूँ किशोर कुमार को. If you want to walk faster, then I think Bhangra music would be the best. Nothing Yes, to beat. Bhangra would be the best. But Yeah. sometimes I listen to the beats also, जो है So एडवांस. whatever suits you, जो पसंद हो. And यस Sayyid Ashaq ji भी हैं. Thanking you for sharing so much of useful information. But a question to everyone is, what's your favorite music? जब आप exercise करते हैं, what is your favorite music? What helps you move? तो सर, टेक्नोलॉजी तो हम, हाँ, यहाँ पे हमने प्रोग्राम में आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि गेम्स के बारे में. जैसे आई वी टोल्ड कि अगर आपका सेडेंटरी टाइम बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो अभी वीडियो गेम पीपल दे हैव रियलाइज दैट कि दे कांट मेक पीपल सिट एंड प्ले द गेम्स. सो नाउ देयर इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ गेम्स कॉल्ड एक्सर गेम्स.
So exer games means you are doing some exercises. You need to move around even in front of the screen to play that game. So they are also trying some methods that this is the gamification part of the exercise. So now the playing games, you are playing a video game, but still you are they are motivating you to move around. So something is happening in that space also, sir. So gamification पहले था सिर्फ बच्चों के लिए, adolescents के लिए, but now for adults also it's being used. There are other ways as well of making exercise more fun and more productive with technology. Many of these simple things we use in the gym. आप दौड़ रहे हैं, ट्रेडमिल आपको जवाब देती है आप कितना दौड़े, कितनी कैलोरीज बर्न हुई. दैट इज टेक्नोलॉजी. आप साइकिलिंग कर रहे हैं, हाउ मेनी साइकिल्स, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, हाउ मेनी साइकिलिंग रेवोल्यूशंस, हाउ मच ऑफ calories burnt, what's the speed, that also technology tells you. So these are different ways in which technology can help us fight obesity. बट अकेले डाइट और एक्सरसाइज से भी बात नहीं बनती, एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन टच केम इन. तो कुछ एक और चीज़ें हैं डॉक्टर अमित, लाइक बिहेवियरल थेरेपी. नाउ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी इज आईबीटी, इंटेंसिव बिहेवियरल थेरेपी. To achieve, to get the advantage of IBT, must I go to a mental health professional, or can technology help me there as well? Are there apps for behavioral therapy? Sir, there are definitely some apps which can help in behavioral therapy also. But as you know, that human touch is very, very important because the most difficult thing to change is the human behavior. And everyone, though, tries it, but they find it challenging. And these challenges may be different for different individual. सो आप इनिशियली मेरा ये मानना है कि अगर आपको कभी कोई भी बिहेवियर चैलेंजेस आ रहे हैं तो पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जरूर टच में मिलें एंड फॉलो एन एप्लीकेशन विच इज सपोर्टेड और गाइडेड बाय दी योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. अगर आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको कोई एप्लीकेशन रिकमेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर एप्लीकेशंस फॉर द माइंडफुलनेस, देयर आर एप्लीकेशंस फॉर द मेडिटेशन, देयर आर एप्लीकेशंस व्हिच कैन सर आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म सर मैंने पढ़ा, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर विद यू. And this term was just me give you. This is these are just-in-time adaptive interventions. So JIT AI. So this is not AI. This is just-in-time intervention, adaptive intervention. So these are going to be kind of sensors, trackers. For example, if you are feeling stressed and you are feeling craving, so there in future there may be AI-based enable applications which are able to sense the change in your pulse rate, which are able to sense the change in your temperature, which are able to see that something is physiologically or biologically changing inside you, and at that time comes a message that please don't eat this thing. So they are trying to understand, and this is called the technological intervention which you may see in the near future. And there are many applications where if you feel stressed, because we know the stress is one of the major causes where the eating pattern changes and depressive illnesses, and we have certain eating disorders which can end up with the obesity also. So here the role of a psychologist, role of a psychiatrist, mental health specialist, and entire team comes in. And good evening to you from Vaishali Dole ji. And so she says, earlier we used to hear about astrology. Then we began learning about medical astrology and multiple uses. So अब ये जो technology है, this is a kind of astrology, barrow astrology. It will predict what we will do, what we will not do. एंड साथ में वो उपाय भी बताती है ये वाली एस्ट्रोलॉजी. एक तो प्रिडिक्ट करती है कि मैं खाने में गड़बड़ी करूंगा या नहीं, और उपाय भी बताती है कि मैं वो शनि को काला कपड़ा पहनाऊं या जो भी करूं, एंड देन आई डोंट बिकम ओबीस. इज दैट द फ्यूचर ऑफ ओबेसिटी मैनेजमेंट? यस सर, और आपने बताया कि मतलब एस्ट्रोलॉजी भी सर एक तरह से कैलकुलेशन, बहुत ही साइंटिफिक मेथड है कैलकुलेशन का. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज एडवांस्ड मॉडल्स व्हिच यू कॉल मशीन लर्निंग टूल्स एंड ऑल, these calculations are happening for the domains where it was not possible, and now they are doing even micro calculations. Even the microscopic aspect of the human life is under surveillance of these calculations. So I think very new applications we will see in the future. And you are very right, everything is based on some kind of mathematical calculation only, sir. So we have talked of technology. डबल एजेड सॉर्ड, टेक्नोलॉजी कैन वर्सन ओबेसिटी. बट अब हम देख रहे हैं इतना पोटेंशियल है फॉर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ओबेसिटी. वी कैन सीक द राइट हेल्थ केयर, बट वी डू नीड हेल्प. ऑफ कोर्स ये तो बार बार आ रहा है कि ह्यूमन टच चाहिए, यू नीड समन टू हेल्प यू आउट.
You can seek the right care. You can diagnose and monitor your weight and body mass index. You can also get help regarding diet. क्या खाएं क्या ना खाएं. AI will help you. You can also get help regarding exercise. They'll tell you the right exercise and how much to do, and they'll make it fun for you. बिहेवियरल थेरेपी में भी मदद मिलेगी, बट फर्स्ट इंटरेक्शन शुड बी विद अ रियल हेल्थ केयर प्रोफेशनल. और चीज़ें भी आती हैं वेट में, सब्सटेंस अब्यूज एंड स्लीप हाइजीन, लैक ऑफ स्लीप हाइजीन. सो कैन टेक्नोलॉजी हेल्प अस इन फाइटिंग सब्सटेंस अब्यूज? So substance abuse may technology, for example, technology can help in substance abuse because it can offer you the support which is sometimes needed. And I'm not remembering there is a one very good app which has done a lot of work in the field of the mental health space. And we know that substance abuse happens because of some reasons or there is addiction is there. So these patients they require a lot of support in terms. So these applications can help and support. For example, there are applications which can help you in quitting smoking also, and they can divert your attention. They can engage you in some kind of listening to the music, and they can engage you in some other activity online only. But at the same time, they try to distract you from that particular thing, and they can plan a schedule. For example, if you are on a nicotine replacement therapy, for now there is an application where actually you can follow the nicotine replacement therapy in the form of and follow that app. So that app I think is coming from one of the company who is making these nicotine tablets also. So these kind of tools and devices are available and which can help in substance abuse. But substance abuse is again a complex thing because there can be withdrawal symptoms whenever you are trying to withdraw yourself from anything which you are abusing. It may be a simple smoking or it can be something more dangerous also. So I think de-addiction, if we are going for de-addiction, then probably the best option is to do it under the supervision of a specialist. डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट. एक और कॉन्सेप्ट है लास्ट वाला, दैट इज स्लीप. सो देर इज समथिंग नोन एज द सोमनो मेटाबॉलिक सिंड्रोम. Somno metabolic syndrome says that sleep is associated with metabolic health. Therefore, sleep disorders are associated with the metabolic dysfunction like obesity. At the same time, obesity can worsen sleep disorders, secondary sleep disorders, and obstructive sleep apnea. So, sir, in your practice, any scope for technology to help us sleep well, to help us monitor our sleep pattern, our sleep phenotype, and also then to improve the sleep quality, supposing OSA is diagnosed? सर ये एक बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है. एंड वी नो कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट विद ओबेसिटी और morbid obesity they are likely to have obstructive sleep apnea and some other sleep disorders as well. And those OSA can also happen in lean and thin people. There can be other causes, but obesity is considered as one of the risk factors for the development of OSA. So now, sir, there are tools. For example, the Apple smartwatch and the Samsung smartwatch. They have applications where if you wear the watch throughout the night, you can simply check your sleep pattern. They will be able to tell you that what is the time you spend in the REM sleep, what is the time you spend in the non-REM sleep, and how much time you are awake. So there are a lot of things you can get an insight regarding your sleep. Now there are different tools also available which are independent of mobile phones, and these are very small smart rings or small devices which are available where actually they can monitor your oxygen levels also and other parameters, and they can give you a rough estimate of your the quality of sleep. Now, sir, there are applications which help you in sleeping as well. You can download these applications and then they play different kind of music where you listen to those music and they help you in falling asleep and having a good sleep. So sleep quality can be improved, sleep quality can be monitored, and sometimes you can diagnose sleep disorders as well with the help of the technology. दैट्स ग्रेट न्यूज़ एक्चुअली. एंड इसका मतलब इतना कुछ है टेक्नोलॉजी में. तो डॉक्टर अमित, ये जो टेक्नोलॉजी है, एज वी स्पीक, इज इट इवॉल्विंग? फ्यूचर क्या है टेक्नोलॉजी का एंड ओबेसिटी मैनेजमेंट का? Sir, I think the future of technology and obesity management is bright because, sir, I think now people are more motivated. They are understanding that obesity is not just it is not a cosmetic thing. जब हम डॉक्टर्स ओबेसिटी की बात कर रहे होते हैं तो वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द कॉस्मेटिक पार्ट ऑफ द ओबेसिटी. We are only thinking about the health outcomes. And we have seen in multiple studies all across the globe, researchers have found that
even 5% weight loss can give you good health outcomes in longer run. So जब भी हम ओबेसिटी की बात करें तो आई थिंक उसको कॉस्मेटिक पार्ट से हटा करके हमें देखना चाहिए, एज ए डिजीज देखना चाहिए, और technology is going to help. And technology is not just about the devices tracking. Now there are newer medications also available. I think these are also advanced research products, advanced technologies also. जहाँ पे अगर हम कई बार हमारा मोटिवेशन काम नहीं आता, कई बार हमारी पूरा एफर्ट डालने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं दिखता, कई बार हम पूरा डाइट फॉलो करते हैं. दिस सिनेरियो इज नॉट अनकॉमन सर. आई थिंक यू आर आल्सो सीइंग मैनी पेशेंट्स who try their level best, वो जो अपना सब कुछ अच्छे से अच्छा करते हैं, but the end of the day they are not able to do. So आपने जैसा इनिशियली बात किया था, you have now these devices which may be available in the future, जो कि एक तरह से swallowing device है. You take those pills and they are able to regulate your hunger, they are able to give you a feeling of satiety. We have some endoscopic balloons which are not very popular nowadays, but sometimes these endoscopic balloons, I don't know what kind of future these they have, but uh, in some of these studies they have shown that they can be as good as bariatric surgery when it comes to weight loss. People with bariatric surgery also, sir, because they need again a long term follow. So once I was going through records of some of the UK based data, it was saying that there is a long wait period for the bariatric surgery. So here the technology can help these people in preparing them for the bariatric surgery till they wait for the surgery. During the surgery, they can support them, give the adequate guidance that what is to be done. And even after post surgery, they need to follow a certain set of guidelines, you can say, regarding the diet, regarding the activity. So it can be again a supported program. Also, as you have seen, as you have told that there are multiple things which are going to come in the future, like stimulating our uh, brainstem and doing Yeah. devices which can do a lot of things you just talked about in the initial part. So I think the future of technology is bright, but we need to make sure that it reaches to the masses. Those who are underprivileged, they are also able to get the technology, access to the technology. And it is important that, sir, the technology is regulated. So this is my take on technology, that if technology is unregulated, it is going to do more harm and then more benefit. Because, for example, AI is there, so there is harm that you can have a deep fake video tomorrow of Dr. Sanjay Kalra and Dr. Amit Gupta discussing obesity, and we are shown that we are talking about some herbal medicine which is Mm. giving you benefit in the obesity. So one has to be aware that what is happening and what are the disadvantages and the advantages. So future is bright, but if used in the right direction, used by the right people, and used in the right context. दैट्स ट्रू एंड दिस ओपन्स अप अनदर विस्टा फॉर टेक्नोलॉजी. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई गोली देते हैं, वो डायबिटीज़ के लिए भी हो सकती है और वेट लॉस के लिए भी. उस गोली की जो टेक्नोलॉजी है व्हिच प्रिवेंट्स द salt from being broken up in the stomach, which allows the medicine to go and reach the bloodstream, वो भी टेक्नोलॉजी है. when you go to a surgeon, जो जिस तरह की वो सर्जरी करते हैं, that is also technology dependent. and after that जो medical care है, उसमें भी you can get precise results using precision medicine, and that precision will be technology based. पुष्पलता ठुकराल जी भी हैं, आपको गुड इवनिंग कर रही हैं. Good And evening. we have Faraz with us backstage. So Dr. Amit, Faraz and his team, they take very good care of us and they handle KK Med Talks for us every week. So Faraz, anything new that you learned today about obesity management and technology? Hi, sir. Thank you so much, sir, once again for this opportunity. As we know that, sir, today is a very important topic, sir. Like as we know that we have discussed related to obesity, lots of problem. But as we live in a global village, that is that totally belongs on technology, right? We are totally what we are delivering right now. That CME is also a part of technology, right, sir? So it's a very great opportunity to all the audience who are watching out. Like if you have things, you have if you have problem, there's are lots of healthcare experts who have shared their YouTube channel and different platform where they share how to manage obesity and what are the things, and there, lots of AI tools are also there to figure it out and get the best possible knowledge, sir. This is the thing I have learned from this entire session of today. Thank you. And we learned a lot from Dr. Amit Gupta. Faraz, could you please show a certificate of appreciation for Dr. Gupta? Yes, Thank sir. you so much, Dr. Amit. Thank you, sir. Thank you. That comes as a surprise for me. Really grateful to you. Thank you, sir.
डॉक्टर अमित का जो ओहदा है इंडिया में और बाहर, वो ये है कि वो बाकी सबको सर्टिफिकेट देते हैं और इनाम बांटते हैं। तो आई थिंक इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस डॉक्टर अमित गॉट एन अवार्ड, बट he would have I think he would share the record for the person who has given the maximum or distributed the maximum number of prizes in the country. No, sir. Thank you, sir. Grateful to you, sir. तो इस सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। डॉक्टर अमित गुप्ता, थारा भला हो। थैंक यू एंड जय हिंद। Thank you, sir. Thank you. Jai Hind, sir. Thank you.